Assalamu alaikum dear participants. Okay, so in today's session we're going to discuss about the Microsoft Excel, and in today's session we're going to also discuss about how we can create the report and checklist and all these things which we have which I have told you that we have to cover in the Microsoft Excel. So in today's session we're going to discuss the whole Microsoft Excel, and as you all know that this was a session of learning management system, but we have skipped it because we have to cover our because we have to cover our components, we have to cover our topics, so that's why we are taking the session of Microsoft Excel today. Okay, so first of all, there are some basic things that you should have to be known. Like this were all the columns like A, B, C, D. So you can see that this was the alphabets. This was a whole columns, and this was a rows. So the full Excel was consist of these rows and columns, and by creating these all rows and columns, this was consisted of in a form of worksheet. This is called a sheet, a worksheet. And if you will add many sheets, like you can see below, sheet 1, sheet 2, sheet 3, so it will be like it was a workbook. Like if you add one more than one sheet, so it will be now as a workbook. So as we have discussed in the previous session, which was our mega session of 2 hours, so in that session, in the last, we have discussed about the home tab. Like these were similar things that was discussed in the Microsoft Word, like bold, italic, underline, colors, or text colors, font. So these were all the things that was discussed previously. Alignments and the text designs, like angle, counterclockwise, clockwise, vertical text. So these were all the text which we have previously discussed in the last session of 2-hour mega session. We have discussed these things. We have also discussed like there are many cell styles as well that you can give to your cell. There are many styles for the cell as well, like color cell, and you have a boundaries as well. You have a light colors, dark colors, boundary, dark boundaries. So these are all the things. You have an option of format as table as well. Like if you add any table in your sheet, so you're going to have a many designs of that table as well. See, but first we have to add any table, and then I'm going to discuss these styles. You have an option of conditional formatting as well. Like so these were all the things that was totally related to styles. So these were three tabs that was totally depend on designs, like how you can make your cell, how you can make your graph, or how you can make your table more effective and more creative. So यहाँ पे आपको सिर्फ styles और designs ही मिलेंगे. So आप उसको आप home tab के जरिए अपने उस text को ज़्यादा effective show करने के लिए you can avail the features, you can avail the designs which was given in this home tab, like these fonts, alignments, styles. Other than this, you have an option of these cells as well. Like आप यहाँ से कोई भी sheet जो है वो raw की और क्या column हो या फिर कोई different sheet हो, तो आप उसको easily यहाँ पे insert कर सकते हैं. You can also insert any cell as well. Like if I would click on insert cell, so see, you have to insert a cell left, right, or you can have you can shift the entire row as well. So these were some positions that where you have to insert a cell. आपको यहाँ पे right पे करना है या ऐसे left पे, या पूरी raw entire raw को जो है वो shift करना है. So first I will to make this raw. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है एक रॉ जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ. सी, यहाँ पे मैंने जो है ये जो है ग्रिड जो है वो सिलेक्ट कर लिया. आई हैव सेलेक्टेड दिस रॉज एंड कॉलम्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक आई एम सेलेक्टेड दिस सेल स्टाइल, एंड सी I have made this output cell styles, and I have created this grid. So यहाँ पे आपको एक grid form नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक colored grid form. So अब अगर मुझे इसमें इस grid के बीच में कोई भी cell insert करना है, and I have to insert a cell. So सी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 14th जो रॉ है उसमें एक नया सेल इंसर्ट हो चुका है. एंड इफ़ आई हैव टू इंसर्ट एनी रॉ, अगर मुझे कोई रॉ इंसर्ट करनी है, सी यहाँ पे एक और रॉ जो है इंसर्ट हो चुकी है. मैं जहाँ भी जो भी जिस सेल को सिलेक्ट करूँगा, वेयर देयर द रॉज और कॉलम वुड बी इंसर्टेड. सी, इफ़ आई वांट टू इंसर्ट अ कॉलम ऑन E and 6, E6 is the address of this cell. Like column is E and row is 6, so this would known as E6. So यहाँ पर मैं अगर कोई column insert करूँगा, see a new column was being generated. So एक और नया column जो है वो insert हो चुका है. इस तरह आप अपने project या फिर अपने जो है graph के middle में you can insert any row or any column or any cell in between your row as well. उसके अलावा आपके पास डिलीट का ऑप्शन है. इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन, लाइक अगर मैंने मुझे ये जो 15th रॉ पे एक सेल जो है वो एक्स्ट्रा ऑड लग रहा है, इफ़ आई वांट टू डिलीट दैट सेल, सो आई एम गोइंग टू सिंपली क्लिक ऑन दिस डिलीट सेल,
and by deleting that cell, this option will going to be occurs. इसमें ये होगा कि हमसे पूछ रहे हैं कि if you want to अगर हमें cell को delete करते हैं, so you want the cell to be up left or you have to delete the entire row or column. So यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा shift cell up. सो जो सेल जो है इसके ज़रिए क्या होगा, जो सेल मैंने डिलीट किया है उसके जगह पे एक और नया सेल ऊपर से आ जाएगा. सो इफ़ आई वांट टू से ओके, सो सी ये डिलीट हो चुका है और उसके नीचे वाला सेल था वो ऊपर आ चुका है. सो इस तरह जो है आप यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर सकते हैं. यू कैन शिफ्ट योर सेल टू वन प्लेस टू अनदर एज वेल. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट एज वेल. यहाँ पे यू कैन एडजस्ट द रॉज एंड विड्थ एंड द कॉलम्स एंड रॉज. उसकी आप हाइट जो है वो उसको ईजिली जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. सी आप यहाँ पे सी अगर आपको एक टेक्स्ट अगर मैं अपने इंसर्ट किया है, लाइक इफ़ आई हैव इंसर्टेड अ टेक्स्ट लाइक कंप्यूटर एंड इफ़ माई टेक्स्ट वॉज लार्जर, अगर मेरा टेक्स्ट जो है वो बिगर टेक्स्ट है और वो मेरी जो है वो पूरे जो सेल में फिट नहीं हो रहा, द टेक्स्ट वॉज नॉट फिटिंग इन माई सेल, सो आई कैन एडजस्ट द रॉज एंड कॉलम्स हाइट एंड विड्थ. सो सी आई कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम एंड आई कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ द रॉ. सो इस तरह जो है आप इजिली उस टेक्स्ट को अपने जो है उसमें अपने सेल में एडजस्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट एज वेल, सेंटर अलाइन, राइट, लेफ्ट, और यू कैन मेक योर सेल इन अ मिडिल पोजिशन एज वेल, इन अपर पोजिशन एज वेल. सी आप यहाँ पे इजीली इसको किसी भी पोजीशन में जो है इंसर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास जो है ऑप्शन है यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं शीट को. लाइक अगर आपको बॉटम में नज़र आ रहा हो शीट 1, शीट 2, शीट 3 करते करते अगर आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन है, आई एम वर्किंग ऑन शीट 3 एंड इफ़ आई वांट टू मेक इट लाइक शीट 1, सो आई कैन सिंपली प्रेस इट एंड आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट टू फर्स्ट. सो नाउ अब आपको ये शीट 1 होगी, ये शीट 2 है और ये शीट 3 है. तो इस तरह आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं एंड यू कैन मूव इट फ्रॉम वन टू प्लेस टू अनदर एज वेल. लाइक अब मैं इसको अगर इसको रीनेम करूँगा आई एम गोइंग टू सेट 1. सो इस तरह जो है आप यहाँ पे कोई भी जो है इसको रीनेम कर सकते हैं. गोइंग टू रीनेम इट 2 एंड लास्टली आई एम गोइंग टू रीनेम इट एज अ 3. सो आई कैन ईजिली रीनेम दैट टैब्स एज वेल. और इस तरह जो है आप इस टैब्स को यू कैन गिव कलर्स एज वेल टू दैट टैब, सो दैट्स व्हाई इट कैन ईजिली बी लोकेटिंग टू यू. ओके, सो इस तरह वो ईजिली लोकेटेबल होगा यहाँ पे अगर मैं कोई भी कलर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो. ओके, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है क्लियर फॉन्ट्स का ऑप्शन है. लाइक इफ़ आई वांट टू क्लियर ऑल, सो यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी मैंने ग्रिड्स, जितनी भी चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं, दैट ऑल विल गोइंग टू बी क्लियर. ओके, इसके अलावा लाइक इफ़ आई वांट टू क्लियर ऑल द फॉर्मेट्स, सो इफ़ आई हैव यूज एनी फॉन्ट्स, एनी स्टाइल्स, सो दीज वुड बी इरेज्ड. तो इस तरह जो है अगर मैंने कोई कंटेंट्स, कमेंट्स या हाइपरलिंक आई हैव इंसर्टेड, सो इट वुड बी क्लियर. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट. लाइक इफ़ प्रोटेक्शन के सिंपली तरीका ये है, इफ़ आई वांट दिस शीट टू बी ओनली सीन टू मी, सो आप इजीली उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को. यू कैन मेक अ लॉक एज वेल. आप उस शीट का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. इफ़ यू नो दैट दिस डेटा वॉज इनक्रिप्टेड और दिस डेटा वॉज वेरी मच प्राइवेट फॉर योर कंपनी एंड यू डोंट वांट टू बी लॉस्ट और you don't want your sheet to be stolen by any other person, so you can add a password to as well. like यहाँ पे password भी किस कर सकते हैं, like 2323. I have simply add a password and okay, so re-enter that password 2323. okay, now this sheet was protected. अब ये जो है शीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो है कोई भी इस पर जो है वो काम नहीं हो सकता. ओके, ये शीट जो है एक तरह से पूरी तरीके से जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है. एंड इफ़ आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक, अब जो है अगर मैं इसको जैसे मतलब अब शीट 1 पे हम काम भी नहीं कर सकते बिकॉज सी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है. ओके, अगर मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूँ शीट को, सो सी नाउ आई जस्ट हैव टू एड अ पासवर्ड. एक तरह से पासवर्ड सेट करने के लिए इफ़ आई एम गोइंग टू सेटिंग एनी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, सो दैट शीट वुड बी लॉक्ड. Each and every feature would be logged, and if I am going to share this file as it is to a viewer, so उसके पास ये sheet खुलेगी सही, मगर he can not been able to edit any of the thing here. यहाँ पे वो कोई भी चीज़ जो है ऐड नहीं कर सकता अपने फाइल के अंदर. so I have to make it unprotected and then I have to share it with anyone. 2323 the password. Okay, and now you can see that the features was now open and I can work on it.
ओके उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है लाइक इसके अलावा हमारे अप एंड डाउन का ऑप्शन है, हम यहाँ पे कोई भी सम एवरेज लाइक सम इज़ ऑफ प्लस एवरेज इज़ ऑफ मल्टीप्लाई, सो इस तरह जो है आपको पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उसको यूज़ करके आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो है इंसर्ट टैब, दिस वॉज द होम टैब एंड दिस वॉज ओनली कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन स्टाइल्स फॉन्ट्स अलाइनमेंट्स टेक्स्ट, सो इस तरह ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ इसके अंदर आती हैं, नॉट मोर देन दैट। इंसर्ट टैब में अगर हम बात करें सो यू आर गोइंग टू इंसर्ट मैनी थिंग्स इन योर फाइल, लाइक यहाँ पे आपको पिवट टेबल भी अवेलेबल है, यहाँ आपको एक नॉर्मल टेबल भी अवेलेबल है, यू हैव टू जस्ट सेट दैट प्लेस वेयर यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, so I have to create a table on H8, like H is a column and 8 is a row, so okay, so now you can see a column was being generated and I want it to be like इसको मुझे increase करना है, so I can increase it as well, I can make it column like इसको increase भी कर सकता हूँ मैं, so see by this you can increase a column and you can add many designs as well, यहाँ पे आपको different जो है वो column के जो है वो designs भी locate हो रहे होंगे, I just have to make it first of all visible for you all, इसको मैं कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमको पेस्ट करते हैं and see now you can see that designs, I can locate you that designs, और यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन जो है अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ से भी डिज़ाइन शो कर सकते हैं, यू कैन सी दैट डिज़ाइंस इन टू हेयर एज वेल, लाइक आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे सही शो नहीं हो रहा डिज़ाइन बिकॉज डिज़ाइन वॉज लोकेटिंग ऑन हेयर एंड the bar was blocking that side, to see you can see at like this, so यहाँ पे आपको different जो है fonts आपको शो हो रहे होंगे, आप उसको easily यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, यहाँ पे टेबल स्टाइल्स, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टेबल स्टाइल्स इफ यू वांट टू फर्स्ट कॉलम एज वेल लास्ट कॉलम एज वेल ब्रांडेड कॉलम्स एज वेल टोटल रॉज एज वेल, तो यहाँ पे आप इस तरह करते करते आप यू कैन मेक योर ईच एंड एवरी रॉ फॉन्टेड, लाइक इफ यू वांट टू मेक योर फर्स्ट रॉ to be fonted, like अगर आपको जो डिज़ाइन है फर्स्ट ऑफ अप्लाई करना है so you will go to tick, you're going to tick that column and if you don't want it so you can make it untick, so इस तरह जो करके आप इसको select करके easily you can avail the designs of the table styles in your table। you have an option of refresh as well, you can refresh all as well, ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट एज वेल, लाइक आप इसको जो है वो पावर पॉइंट पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस टेबल को यू कैन एक्सपोर्ट इट। ओके उसके अलावा हमारे पास जो है ऑप्शन है टेबल का, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द टेबल एज वेल, लाइक इफ यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द टेबल लाइक इस टेबल आई जस्ट वांट टू ऐड अ टेबल नेम, सो आप यहाँ पे इसी टेबल के नेम भी ऐसे कर सकते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि इट फॉर इनवैलिड बिकॉज टेबल तो पहले से जनरेटेड नेम है ना, तो आपको न्यू नेम जो इंसर्ट करना होगा, सो लेट्स इंसर्ट अबाउट दी दिस इज अ एक्सेल sheet, so this was the name of my table। okay so now this was I've given the name of this table as well। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ व्यू टैब एज वेल, सो व्यू टैब इज टोटली डिपेंड ऑन हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइल, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर डिज़ाइन इन फ्रंट ऑफ अ व्यूअर, इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु विल गोइंग टू रिव्यू योर फाइल, सो उस तरह आप इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, आप इसको एक न्यू विंडो में स्प्लिट कर सकते हैं। न्यू विंडो का मतलब ये कि यू विल गोइंग टू रिसीव अ न्यू पावर पॉइंट ऐप, आपको एक तरह से एक नई विंडो जो है ओपन हो सकती है। यू कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ स्विच window as well, you can switch the window towards that first window as well, आप window switching भी कर सकते हैं, but first of all I just want to work on this first window, so I just been stuck on this window, not I don't want to switch it to another window। उसके अलावा आपके पास जो है macros option है, you can record that macros, you can view that macros as well। actually this was actually a thing, like if you want a thing, like if you have created a data and you think that you believe that this data was not been easily understandable for the viewer, वो आसानी से समझ में नहीं आएगा, so you can add any macro there and you can stick a macro with a description by writing a description, and you can write any of the name or any of the description you can enter and you can create it as well। आप उसको create कर सकते हैं। see this was a macro was created and this was consisted of some programming codes that you have to insert and then this will going to be work in your sheet। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्ट करते हैं जो भी आपको चाहिए, so you will going to get it in your thing। ओके सो वी हैव टू कम बैक। इस तरह जो है यहाँ पे मैक्रोस भी ऐड करते हैं, यू कैन रिकॉर्ड दैट मैक्रोस एज वेल। आप यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपको भी आप ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं, एंड यू कैन ऐड अ शॉर्टकट की एज वेल, लाइक हाउ यू कैन ओपन दैट मैक्रोस। सो ये भी एक तरह से इसका फीचर है, दिस वॉज एन अपडेटेड फीचर एंड दिस वॉज द एडवांस फीचर ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है रूलर का, ग्रिड लाइन का, फॉर्मूला बार, हेडिंग. दीज ऑल आर द ऑप्शंस दैट यू कैन इंसर्ट इट टू योर शीट. लाइक इफ यू वांट योर हेडिंग, सो दिस. नाउ अब हेडिंग जो है वो डीएक्टिव हो चुकी है बिकॉज आई हैव अनटिक दैट हेडिंग. एंड इफ आई एम गोइंग टू प्रेस इट अगेन, so see the heading was now being visible. If I don't want the grid line, so see you don't see the that grid line, but if I want to see the grid line, so see अब grid lines भी जो है वो available है. formula bar भी इस तरह यूज होगा. If you don't want to see a formula bar, this was actually a formula bar, this. So if you don't want to see it, so you can just untick that. तो इसके अलावा जो है ये सब चीज़ें जो है दिस फीचर्स विल बी गोइंग टू बी मेक योर एक्सेल शीट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इफेक्टिव. बट इफ यू डोंट नीड, सो यू कैन जस्ट अनटिक दैट थिंग. उसके अलावा ऑप्शन है पेज ब्रेक. यू कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ पेज ब्रेक एज वेल. यू कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ फुल स्क्रीन एज वेल. आपको फुल स्क्रीन मोड में भी शो कर सकते हैं, आप इसको पेज ब्रेक कर सकते हैं. सी नाउ द पेज वॉज ब्रेकन इनटू 2 and 3 parts, बट यूजली द पीपल वॉज नॉट यूज दैट बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली इन अ मिक्सअप फॉर्म. लाइक यहाँ पे पेज 1 पेज 2 दो पेजेस में डिवाइड हो चुका है आपका वो. ओके, इस वक्त तो मैंने पूरा जो है एक तरह से पूरा ही रॉ कॉलम फॉन्ट किया है ना मैंने, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जो है मैसअप लगा होगा. मगर यूजली लोग पेज 1 पेज 2 करके लोगों को जो है वो कंपनीज को डिस्प्ले करते हैं. पेज ओके, आई जस्ट वांट इट टू बी बैक. सो इस तरह हम वापस आ चुके हैं. इसके अलावा ऑप्शन है नॉर्मल मोड का, पेज लेआउट का. पेज लेआउट मोड इज लाइक दैट. आपको ये जो फॉन्ट है आपको यहाँ पे पेज लेआउट मोड में नजर आ रहा होगा. उन्होंने पेजेस में जो है आपकी वर्कबुक को डिवाइड कर दिया है. उसके अलावा आपके पास जो है ऑप्शन है, आप जो है इसको आपके पास ऑप्शन है लाइक आप जो है इसको वापस भी ला सकते हैं. लाइक नॉर्मल मोड में भी ले जाते हैं. सी नॉर्मल मोड में आ चुका है ये, और जो है वो ईजिली जो है वो नॉर्मल मोड में भी जो है वो लोकेटिंग है, ईजी लोकेटिंग है. उसके अलावा यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रिव्यू. आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रिव्यू. लाइक सी दिस वाज द प्रीवियस ऑप्शन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. लाइक शेयर वर्कबुक. इसको इफ यू वांट टू शेयर विद समवन, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक इट एंड यू हैव टू शेयर दैट वर्कबुक इन अ एक्सेल फाइल. प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट करेंगे, सो यू हैव टू एंटर अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट दैट विंडो. प्रोटेक्ट शीट, if you want to protect only this sheet like sheet number 1, so you have to insert a password and this sheet will be protected. But if you want to insert protect your whole workbook, यानी कि आपको सारी sheets protect करनी है, so you have to set a password for protecting workbook. इसके अलावा ऑप्शन है न्यू कमेंट्स. कमेंट्स यू कैन ऐड एनी कमेंट एज वेल, लाइक हाउ यू कैन क्रिएट और वेयर यू हैव क्रिएट और वेयर यू हैव कलेक्टेड दिस रिसोर्सेज. तो कुछ भी आप यहाँ पे कमेंट सूरत में कुछ भी आप लिख के पेस्ट कर सकते हैं ऑन योर ऑन दिस शीट एंड दैट वुड बी लोकेटेड, दैट वुड बी ईजिली जो है सीन बाय योर व्यूअर. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट. यू कैन ईजिली ट्रांसलेट एनी अदर थिंग यू वांट ट्रांसलेट फ्रॉम हेयर, लाइक यू इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू एनी अदर लैंग्वेज you want to translate, so you can easily translate from here. Theater you have, theater means like if you want to search any word, any term, so you can insert or search any word from this theater or research. आप यहाँ पे स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं. you can insert any of the spellings as well. okay, आपके पास स्पेलिंग चेक का भी ऑप्शन है. यू कैन इंसर्ट चेक एनी स्पेलिंग यू वांट टू चेक. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ द टैब ऑफ डेटा एज वेल. आप यहाँ पे डेटा कलेक्शन का भी आपके पास ऑप्शन है. हेयर यू कैन जस्ट यूज दिस ऑप्शन लाइक गेट एक्सटर्नल डेटा इफ यू वांट टू if you want any image, any web address or any other thing you want from any other area. like अगर आपको externally कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, you want it to be display on your sheet, so आप externally कोई भी चीज़ insert कर सकती हैं. any picture, any website, any document, anything you want to add, any text, any of the access, कुछ भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं easily. उसके अलावा you have an option of these existing correction or these other resources, so these all are the filters. you have an option of filters as well. so ये सब जो है आप easily इसको use कर सकते हैं in your data. but this was not in your level because the participants which was in my course, they were not been up to this level. they are junior students. They don't know well aware of these all terms. so so as we're going to move ahead, so we're going to discuss these features as well. but till now your level was not up to this mark, so you cannot able to understand these all terms like existing correction from other resources or filters or grouped, ungrouped or subtotal. so these all were some high level features that the person will going to know. Formulas. okay, let's talk about the formulas. so formulas are very easy topic here. like आपको यहाँ पे बहुत सारे formulas मिल सकते हैं, multiplication, division, subtraction. so यहाँ पे आपको different formulas हैं. you just have to insert any formula. like for take an example, I can take the sum option. okay, now I'm going to insert a number like 12 and another I have to insert first of all logo. like यहाँ पे मेरे को जो है एक logo जो है मुझे insert करना है, and then I'm going to insert a bracket
and I have to insert a number again. Like I take an example of 10 and I will insert 10. Okay, and just I have to insert a enter. So see, 12 tens are 120. So this was actually a multiplication, and now I'm going to get the sum of 120. So इस तरह जो है आप इसको easily आप multiplication और division के sums भी you can easily perform here as well. You can have an option of this option of recently used as well, like data. Here you can add any year, month or day, dollar. You can add any number or decimal, and if you want to convert that number into another currency, like यहाँ पे अगर आपको कोई डॉलर को कोई another currency में यूज़ करना, तो आप यहाँ पे easily currency के related to जो है यहाँ पे आप easily उसको convert कर सकते हैं. This option is totally depend on currency, money or any other dollar, euro or any rupees. Values is actually a text. If you want to add any text, so see, if I'm going to add this value option, so okay, and now I have to enter a text. Text can be any word as well, any quotation as well. So technology, it's a word, and if I'm going to press it okay, so see, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है हैशटैग वैल्यू. अभी क्या वैल्यू, इफ द यूजर अगर कोई व्यूअर अगर सो ऐसे ओपन करेगा, सो इट विल गोइंग टू बी क्लिक ऑन डबल टैप एंड ही विल गोइंग टू रिसीव अ टेक्नोलॉजी. सो इस तरह आप इसको कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर ऑन योर स्लाइड, एंड दैट विल गोइंग टू बी दिस टर्म विल गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट योर होल आइडिया. इस तरह से आप जो है पूरे आपने जो क्रिएट किया, जो डेटा पे क्रिएट किया है, जिसके जो टॉपिक है डेटा जो जिस पे क्रिएट किया है, तो इस तरह आप उसको वैल्यू में इंसर्ट करके यू कैन यू कैन ईजिली मेक योर व्यूअर अंडरस्टैंडेबल बाय इंसर्टिंग दिस वैल्यू. आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर उसको ईजिली आप उसको समझा सकते हैं बाय इंसर्टिंग दैट वैल्यू. ओके, नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ट्रू. लाइक यहाँ पे आप कोई लॉजिकल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. यू हैव अ बैथ टेक्स्ट एज वेल, एनी यू कैन कन्वर्ट एनी नंबर टू टेक्स्ट, यहाँ पे आप कर सकते हैं. सम, यू हैव एन ऑप्शन सम एज वेल. यू कैन हैव एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट. तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं. बट दीज फंक्शन, सम फंक्शन आर some are the related to computer science, some are related to commerce. So these are some, like financial, if we're talking about, so these were actually the some financial terms that the person who can work on the financially working, like some like commerce student normally, so they know these terms and they can easily work on that. So ये जो है वो नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन के लिए दिस ऑप्शन इज़ नॉट बिन सूटेबल, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनी थिंग. उनको पता नहीं है कि वो इस पर क्या काम करे, बिकॉज दिस वॉज सम अदर वर्क. ये जो है कोई और फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए यूजली जो है ईजिली वर्क कर सकता है, एंड स्पेशली सम विच आर बीन रिलेटेड टू फाइनेंशियली और फाइनेंस और एनी कॉमर्स स्टूडेंट्स यूजली. लॉजिकल, what are logical is totally these terms like and, false, if, error, not, or, true. These were actually work in computer science. Like computer science के बहुत सारी branches हैं, and among those branches were about logic gates as well. Logic gates were actually one of the branches in that area. तो वहाँ पर जो है इस तरह के जो है codes use किए जाते हैं, if statements, if not statements. So you can work from there as well. But these statements are only for the computer science students, and they can know very much about these, like how you can work it, like true statements, false statements, and there are some logic gates as well, and gate, NAND gate, NOR, XOR. So ये बहुत डिटेल हो जाएगा आप लोगों के लिए. The age of the students of today of our course was not as like that कि आप जो है इसको easily understand कर सकें. Text है यहाँ पे बहुत सारे different texts are there. Substitute, text, trim, upper value, so replace, left, right. So these all are the texts that you can insert in your file. You have an option of date time as well. You can add any date, year, month. You can add any hour, minutes, months. So ये आप कोई भी जो है insert कर सकते हैं. Usually अगर आप कोई calendar made बना रहे हैं, if you are making any budget, any calendar or any timetable for your company, for your school, for your any institution or for your any area, अगर आप किसी के लिए भी कोई set कर रहे हैं schedule या कोई calendar बना रहे हैं, so normally this area will be very effective and very helpful for you all to create anything like months, minutes, hours. आप कुछ भी जो है यहाँ select करके आप उसको create कर सकते हैं. Like first take an example of hour. I just have to insert a serial number, like how many hours should a employee work, या इस तरह करके कुछ भी जो है आप insert कर सकते हैं. like 12 hours, like 12 insert किया मैंने. So see,
12 की वैल्यू 0 यहाँ पे इंसर्ट की गई है बिकॉज द आर्ड्स आर ऑफ 0. सो ये अगर आप सीरियल नंबर एक्चुअली है, और अगर आप इसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा द पार्टिसिपेंट विच आर इन माई सेशन, सो इफ दे विल गोइंग टू एक्सप्लोर इट, सो दे विल गोइंग टू गेट अ मोर अबाउट दिस. उसके अलावा हमारे पास जो है मैथ एंड ट्रिक्स है हमारे पास. उसके अलावा लॉकअप एंड रेफरेंसेज, देयर आर मेनी रेफरेंसेज here. More functions are like statisticals. The person who know about statistics, so they know how to work on this option. Engineering students can also know about these terms and they know how to work on that. Cube, information, compatibility. So यहाँ पे बहुत सारे different areas हैं that the person can work on. The participants in my session cannot do that because they are not been able to do that because they are not in that age or in that experience. So if you have any question, you can ask in the comment section or in the group as well, okay, related to any of the function here. उसके अलावा बस जो है डिफरेंट उसके अलावा ऑप्शन है डिफाइन नेम्स एंड वर्कबुक का जो है आप यहाँ पे जो आपने वर्कशीट क्रिएट की है, जो अपनी पूरी वर्कबुक है उसकी आप यहाँ पे नेम या स्पेसिफिकेशन या कमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं. दैट वी गोइंग टू डिस्क्राइब योर वर्कबुक, क्रिएट फ्रॉम सेक्शन और एरोज और अपना ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, डिफरेंट फार्मूला से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. Another thing is that we have a page layout tab, and page layout tab was in Microsoft Word as well, Microsoft PowerPoint as well. Everywhere is of page layout tab. In that tab, you have a page setup. You can add a break in your page. You can make your file, your sheet रीसाइज. आप यहाँ पे साइज इंसर्ट करते हैं A3, A4, B4, B5. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट साइज आपको मेंशन. यू कैन ऐड एनी साइज टू योर शीट. यू हैव ऑप्शन ओरिएंटेशन एज वेल. यू कैन ऐड अ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फॉर्म. आप यहाँ पे पोर्ट्रेट फॉर्म में या लैंडस्केप फॉर्म दोनों में से किसी फॉर्म में भी आप अपने जो टेक्स्ट को उसको विजिबल कर सकते हैं. लाइक इफ यू ऐड अ लैंडस्केप फॉर्म, तो सी द लैंडस्केप फॉर्म आर लाइक दैट. इफ यू हैव ऐड अ पोर्ट्रेट फॉर्म, तो सी पोर्ट्रेट इज समथिंग लाइक दैट, बट आई हैव इंसर्ट एनीथिंग अदर. ये यहाँ पे ना, यस, पोर्ट्रेट फॉर्म में आप यहाँ ला सकते हैं. आप उसको जैसे मर्जी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. मार्जिन, इफ़ यू वांट अ वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, सो यू कैन ऐड दैट टाइप ऑफ मार्जिन एज वेल. लाइक इफ़ आई वांट अ वाइड मार्जिन, सो आप उसको वाइड भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट अ नैरो मार्जिन, सो आप उसको नैरो भी कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड टू अ टेक्स्ट, सो यू कैन ईजिली इंसर्ट एनी टेक्स्ट फ्रॉम हेयर. लाइक आप यहाँ पे सी, अब आपको यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो है एक टेक्नोलाइट्रेट जो मेरा लोगो है उसका जो एक बैकग्राउंड जनरेट हो चुका है. अ बैकग्राउंड वाज जनरेटेड इन बिहाइंड दिस शीट which is of Technolitrate. So you can create any of the background you want to create and you can add in your sheet. This was actually an update in this Microsoft Excel, but normally the in previous, like अगर आप 2007 के Excel की बात करें, so it doesn't have this option. उसके अलावा ऑप्शन है दिस themes, like colors you have, different colors you have a different fonts as well. So these all are the previous thing. Like you can have a lots of effects as well. You can add any effect to your sheet as well. So these all were the previous features that we have already discussed in Word as well, PowerPoint as well, and in the home tab of Excel as well. So यहाँ डिस्कस कर चुके हैं हमसे बहुत सारी चीज़ें. थीम्स है हमारे पास. वी हैव अ डिफरेंट थीम्स. लाइक इफ आई एम गोइंग टू स्क्रॉल अप, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स जो है आपको मेंशन हो रही होंगी. सी यहाँ पे आप इजीली कोई सी भी जो है आप थीम इंसर्ट कर सकते हैं. यू कैन इजीली वर्क ऑन दैट थीम. सी यहाँ पे बहुत सारी जो थीम है आपको यहाँ पे शोन हो रही होंगी. उसके अलावा यू हैव एन ऑप्शन ऑफ द विड्थ, हाइट, स्केल. आप उसको स्केल मैनेज कर सकते हैं लाइक 80, 75, 70 और 100. एंड यू कैन एडजस्ट दी हाइट लाइक 3 पेजेस, लाइक 6 पेजेस. आप उसके हिसाब से हाइट ही मैनेज कर सकते हैं. आप विड्थ मैनेज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन की, अपने शीट की. यू कैन एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर विड्थ ऑफ शीट के विड्थ की आप मैनेज कर सकते हैं विड्थ. उसके अलावा यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ग्रिड लाइन, हेडिंग. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस view tab. So this was same thing was here as well. उसके अलावा वापस हम आ चुके हैं इंसर्ट टैब के ऊपर. एंड द लास्ट थिंग वाज बीन डिस्कस इन द इंसर्ट टैब वाज अबाउट दिस पाई चार्ट्स, बार ग्राफ. यू कैन ऐड दिस पाई चार्ट्स एज वेल इन योर फॉन्ट. आप यहाँ पे कोई सा भी जो है ग्राफ फॉर्म के अंदर आप कोई भी ग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. यू कैन ऐड ए लाइन ग्राफ एज वेल. You can add this column or win or loss. So these all are the things that you can insert in your sheet. उसके अलावा आपके पास pictures, clip arts, shapes. तो ये तो basic है. This were all are the basic things that was being inserted. Another thing is that
You can insert any more pictures as well. You can add you have different option of picture as well, like see you can add a picture as well, and then you will go to create same options that we have twicely discuss in the both the application. like ये जो चीज़ हम Microsoft PowerPoint और Word में दोनों में डिस्कस कर चुके हैं, ये इमेज को हाउ टू अफेक्ट योर इमेज, स्टाइल्स, अरेंजमेंट, साइज, एडजस्टमेंट, सब चीज़ हम ये जो है डिस्कस कर चुके हैं. सो विल नॉट वेस्ट टाइम एंड विल गोइंग टू मूव अहेड. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ वर्ड आर्ट. यू कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड आर्ट एज वेल. आपके पास यहाँ पे जो है वो सिम्बल्स के भी ऑप्शन है. सी देयर आर लॉट्स ऑफ सिम्बल्स हेयर. यू कैन ऐड एनी सिम्बल यू वांट टू ऐड इन योर डिज़ाइन, और you have an special text as well. See, registered, copyright, these all are the special characters that you can insert. Numbers as well you can insert in your text. More on, we have the option of like आपको यहाँ पे equations का भी option you can get. You can add any equation in your text as well. और आप यहाँ पे जो है आपको different यहाँ पे equation like fraction equations मिल सकती हैं, scripts मिलेंगी, radicals, integers, larger operators. आपको यहाँ पे बहुत सारे different जो है वो आपको easily यहाँ पे available हैं. यहाँ पे जितने भी आपके पास जो है वो symbols हैं, structures हैं आपके पास, ये सब चीज़ें जो है mathematical operators हैं, वो सब आपको यहाँ पे easily मेंशन है, वो भी आपको इक्वेशन टैब के अंदर. तो सी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास जो है इस सब चीज़ों के लिए, और जो है आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं. यू कैन वर्क ऑन दी शीट एज अ मैथमेटिकल फॉर्म एज वेल. आप मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं. प्रोफेशनल, if you use this professional tab you can get like type here equation. तो यहाँ पे आप easily कोई भी equation type कर सकते हैं. like अगर आपको कोई sum समझ नहीं आ रहा है, so you can insert that sum and you can try to resolve, or you can try to practice that equation or sum on Microsoft sheet, Excel sheet as well. आप यहाँ पे कोई भी जो है वो equation insert कर सकते हैं. You can have a linear equations as well, you can have a normal text as well. तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है इक्वेशंस जो है यू हैव गिवन एंड यू कैन इंसर्ट इट इन योर एक्सेल शीट. तो यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो सब हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन लेफ्ट इन योर माइंड और एनी थिंग विच यू नो एंड विच वॉज नॉट डिस्कस इन द सेशन एंड विच द थिंग वॉज ऑलरेडी नोन टू यू, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन. यू कैन मेक इट वेल अवेयर ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल. इफ़ यू नो समथिंग वेरी रेयर अबाउट दिस एप्लीकेशन, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे सेशन में, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इजीली जो है वो उनको वेल अवेयर हो जाए, वेल नोन हो जाए उस एप्लीकेशन के साथ, उस फीचर के साथ. ओके उसके अलावा वी हैव द थिंग्स दैट वी हैव दिस सेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. वी जस्ट डिस्कस द the light things, like we did not discuss about the deep things, और हमने कोई deeply जो है वो उस things को discuss नहीं किया है. We have just discussed some normal things and we have just discussed the light things as up to your level, as up to your age, उसके हिसाब से discuss किया गया है. वरना ये बहुत जो है वो detailed application है और बहुत detailed tool है that was not been covered in one session, but we have discussed it, the things which was given, which was the topic of our course, which was been our topic of the course was completed. और जितनी भी चीज़ें हमारे कोर्स में थी about the Microsoft Excel, वो चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं. we have discussed about the tables, we have discussed about the designs, we have discussed about the checklist, we have discussed about the sums. so ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी चीज़ें हमारे कोर्स का पार्ट थी. but if you have any questions, so you can ask in the WhatsApp group. I am there to answer you, or you can ask in my private number as well, if you have any query left. Okay, so I hope you will going to be well aware of that, and you will go, this session will be very productive for you. I want your feedbacks in the WhatsApp groups, and if you are going to make it acknowledged, so I'm going to mark your present, otherwise you will not be marked present. Okay, thank you so much everyone. This session was now ending, and I'm going to be meet you in the next session with the new topic, which was inshallah about the graphic designing. And we have many tools which was related to graphic designing, and we're going to discuss that. But I will not going to broke your suspense. I'm going to meet you tomorrow with the new topic of graphic designing. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much.